Good morning. Let's start a new concept about light, that is power of lens. In the previous class, we have studied about lenses. We know that there are two type of lenses. One is convex lens, another is concave lens. And we know also that concave lens is called your diverging lens, and convex lens is called your converging lens. Today we'll discuss what is actually power of lens and what is the definition of power, how it is related with focal length, what is the formula, what is the unit of power, and if we combine two or more lenses together, what will be the power of lens. We'll discuss this in today's class. So let us start with news. Start. What is power of lens? Power of lens. So power, this term we have studied in previous classes, in class 11th, class 9th, in class 10th also. It is related with work, right? So how much work is done in unit time is called power. एक सेकेंड में कितना काम करते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पावर. Similarly, here the work of lens is to diverge or converge, right? Here, when the light incident on the lens, the work of the lens is to bend the light. Convex lens bend the lights towards the principal axis, or I can say it converts the light, whereas concave lens diverts the light away from the principal axis. So its work is to diverge the light. So basic work of the converging lens and diverging lens is to bend the light towards or away from the principal axis. So when I'm saying power is related with the work. So here in the context of lens, how can I define power? So here I can say how much a lens can bend the light is defined is power. पावर लेंस का पावर कैसे डिफाइन होता है कि एक लेंस कितना डाइवर्स या फिर कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, उसी को हम उसका पावर मानेंगे. Let's see an example here. Here two lights, two lenses there, lens 1 and lens 2. Here parallel lights are falling on both the lenses. In lens 1 as well as in lens 2, parallel lights are falling. So if I see the example lens 1, I can see here when the parallel light fall on the lens, it is converging at a point f1 here, right? If I see the example 2, I can see here the parallels are meeting at a point f2. Okay, if I compare f1 and f2, I can easily see that f1 is closer to the lens and f2 is farther away from the lens. That means I can say that यहाँ पर अगर एग्जाम्पल 1 पे क्या हो रहा है, आपका लेंस जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या कर रहा है, लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, जल्दी बेंड कर रहा है. उससे क्या होता है, मेरा लाइट जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, उसके लेंस के बहुत करीब कन्वर्ज हो रहा है. Whereas if I see in example 2, I can easily see that in example 2 here the convex lens is not able to converge the light so easily, so near to the lens, ये ज़्यादा करीब उसको कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है. So I can say here the focal length of the lens is far more than the focal length of the first lens. So I can say f2 is greater than f1, right? f2 is greater than f1. If I say about power, लेंस का काम क्या है, कन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्स करना. जो जितना जल्दी कन्वर्स कर पाएगा, जो जितना लेंस के पास कन्वर्स कर पाएगा, उसका पावर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर अगर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, हम आराम से बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपका जो लेंस 1 है ये जल्दी कन्वर्स कर पा रहा है, लेंस के बहुत करीब कन्वर्स कर पा रहा है. तो आई कैन से पावर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन दिस पावर ऑफ सेकेंड वन. तो हम लेंस 1 का पावर लेंस 2 से ज़्यादा है. तो पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पावर क्या होता है ना, पावर होता है क्या, कैपेसिटी ऑफ लाइट
to converge or diverge. Okay, it is the capacity of the, sorry, I can say capacity of lens. Okay, capacity of lens to converge or diverge the light. Converge or diverge the light. Right? Capacity of lens to converge or diverge the light is called the power of lens. So यहाँ पर lens 1 ज़्यादा जल्दी converge कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि power of lens 1 is more as compared to the power of second lens. So we know this is the definition of power. Now if you compare this power with the focal length, how can we see here? Look, here it is clearly observed that power of lens 1 is greater than power of lens 2, but whereas focal length of 1 is less than focal length of 2. So अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम एक जनरल फार्मूला पे पहुंच सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर पावर बढ़ेगा तो भाई फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, अगर पावर डिक्रीज हो रहा है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा. दैट मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. तो पावर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन क्या हो गया? तो पावर क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. सो आई कैन से P इक्वल टू 1/f. Okay, in the previous derivation we have studied that we know the lens maker formula. We know that 1/f equal to mu minus 1 into 1 minus r1 minus 1/r2, where r1 and r2 are the radius of curvature of both the sides, both the spheres, right? So in general P becomes 1/f, that is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2, where P is the power of lens, f is the focal length of the lens, and mu is the refractive index of the lens, and r1 is the radius of one side, and r2 is the radius of another side of the lens. So this is the way how can we relate the power with focal length. Next, what is the unit? Unit. I can say unit of the power is diopter. The unit of the power is diopter. It is symbolized by capital D. So how it is related to the focal length? I can say the focal length, unit of focal length is meter. So I can say 1 diopter equal to 1 by meter. 1 diopter equal to 1 by meter. सो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. चलिए, तो अगर हम बोलेंगे कि एक क्वेश्चन है, इफ ए कन्वेक्स लेंस इज गिवन टू मी, ए कन्वेक्स लेंस इज गिवन टू मी whose focal length is 2 meter. So what will be the power of lens? तो आंसर करते हैं. चलिए, यहां पर फोकल लेंथ कितना गिवन है? 2 मीटर. फोकल लेंथ इज 2 मीटर. Here I have to say, here the focal length will be positive or negative. In convex lens we know that focal length is positive because parallel rays meet at the right side. So I can say focal length is positive here. So I can say f equal to plus 2 meter. So again we know P equal to 1 by f. F is given to me 2 meter. So I can say P will be 1 by 2 diopter, that is 0.5 diopter. The answer will be power of the lens will be plus 0.5 diopter. Okay, so in this way we can solve the questions. Now it is about your one lens. If it is in the question, if it is given one convex lens, I can calculate the power of that lens. But if there will be more than one lenses, how can I calculate the power? What will be the power? Here, look, suppose here in figure A, here there is one lens. Here the incident light is falling on the lens, and it is the diffracted ray meeting at the point I prime, right?
I prime. So I can say u will be the object distance and v prime will be the image distance. Now, if I will place a second lens here in front of the first lens, if I place another second lens, what will happen? Look, here the light is going in this way, the incident light is going in this way. When there was no lens, when there is no second lens, light was falling on I prime. Right? If I throw thousands of light, all the lights will fall on I prime. Every light will fall on I prime, right? सारे के सारे लाइट जाए कहाँ मिलेंगे? आई प्राइम पे, तभी तो मुझे इमेज मिलेगा ना आई प्राइम पे। कब मिल सकता है मुझे इमेज? चाहे जो भी इंसिडेंट लाइट जो जिस भी डायरेक्शन पे आए, अगर आई प्राइम पे मिलेंगे तभी मुझे आई प्राइम पे क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। दैट मीन्स ऑल द लाइट्स आर फॉलिंग ऑन द आई प्राइम। नाउ कम टू द सेकंड लेंस। When the second lens was not there, all the light was falling on I prime. Now यहाँ पर हर एक एंगल से लाइट आके गिर रहा था आई प्राइम पे। अब मैंने क्या किया? सेकेंड लेंस प्लेस कर दिया उस जगह पे। सेकेंड लेंस जब प्लेस कर देंगे तो मुझे क्या लगेगा? यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स इस तरह से जा रहे हैं, आई प्राइम पे मिल रहे हैं, तो एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं। कहाँ पर? आई प्राइम पे कन्वर्ज हो रहे थे जब सेकेंड लेंस नहीं था। तो मुझे इन्वर्सली मैं अगर देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा? अगर इन्वर्सली मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि भाई आई प्राइम से तो सारे लाइट एक मान के चलिए कहीं पर एक लाइट जा रहा है, टॉर्च अगर ऑन करेंगे तो टॉर्च से लाइट डाइवर्ज होगा, तो उसका सोर्स पॉइंट कौन है? आप जो जिस पॉइंट से डाइवर्सन शुरू होता है वही तो सोर्स पॉइंट है। यहाँ पर अगर देखेंगे आई प्राइम पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब आई अगर हम रिवर्सली देखेंगे तो क्या होगा? आई पॉइंट से डाइवर्सन होना शुरू हो रहा है। तो अगर सेकेंड लेंस के लिए हम देखेंगे तो हम देखेंगे भाई आई प्राइम से तो डाइवर्ज होना शुरू हो रहा है ना, तो आई प्राइम को हम क्या मान सकते हैं? सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हैं। सेकेंड लेंस के लिए सोर्स कौन हो जाएगा? आई प्राइम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पोजिशन कौन हो जाएगा? आई प्राइम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गया? आई प्राइम, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेंस के लिए फॉर द फर्स्ट लेंस द ऑब्जेक्ट पोजीशन वाज यू, and the image position was v prime. For the first lens, when there is no second lens, the object position was u and the image position was v prime. When the second lens is placed in front of the first lens, I can say here for the second lens the object position becomes I prime and the image position becomes here. The light will bend more because due to the second lens it will bend more, and finally I will get the image at place I, at the place of I. So the final image position will be V, right? So I can say when there is no image, when no second lens was there, I can say 1 by f equal to 1 by v prime minus u, because I know the formula 1 by f equal to 1 by v minus u. Here for the first lens image position was v prime, so I have written v prime minus u. Okay, when I have placed the second lens, for second lens I can say इसको हम f1 लिख लेते हैं, इसको f2 लिख लेते हैं। 1 by f2 will become, फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. सो सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना हो गया? f2 लिख लिया हमने। नाउ सेकेंड लेंस के लिए v क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर इमेज पोजीशन क्या हो गया? v, इमेज पोजीशन हो गया v, लिख लिया हमने v माइनस ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा? आई प्राइम विल बी द ऑब्जेक्ट पोजीशन। सो आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम कितना लिखेंगे? v प्राइम। तो यहाँ पर आई प्राइम को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका v प्राइम बन जाएगा सेकेंड लेंस के लिए
object distance. So equation will be 1 by f2 equal to 1 by v minus 1 by v prime, right? 1 by v prime. Now if we have to combine this both the lengths, we have to combine both the lenses. That means we have to add this both the lenses. If we add this 1 by f1 plus 1 by f2, राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा. 1 by v prime minus 1 by u इक्वल प्लस 1 by v minus 1 by v prime. तो ये कैंसिल हो गया आपका, v prime कैंसिल आउट, बचा क्या 1 by v minus 1 by u. तो यहाँ पर हम 1 by f1 प्लस 1 by f2 को हम कंसिडर करते थे 1 by f. तो इसका समेशन को हम कितना लिखेंगे 1 by f. That means 1 by f becomes 1 by v minus 1 by u. 1 by v minus 1 by u. That means here 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. That becomes 1 by v minus 1 by u. That means 1 by f के 1 by क्या f क्या होता है total focal length, the focal length of the combination of the length, focal length of the combination of the lengths. So in place of f I can write p. तो p क्या हो जाएगा, p will become the total focal total power or the power of the combination of the lengths, power of the combination of the lengths. So in place of 1 by f1 I can say p1, in place of 1 by f2 I can write p2. That becomes 1 by v minus 1 by u. So my final equation will be p equal to p1 plus p2. That becomes 1 by v minus 1 by u. यहाँ पर हमने दो लेंस को अगर कंबाइन करके रखा, पास पास रखा, कांटेक्ट में रखा है, तो टोटल कॉम्बिनेशन पावर, टोटल पावर, कंबाइंड पावर क्या होगा p1 प्लस p2. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर तीन लेंस रखते हैं, इसका पावर मान के चलते हैं p1, इसका p2, इसका p3, तो कॉम्बिनेशन टोटल पावर कितना आएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 आएगा. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पावर. अगर कंबाइन करके रखते हैं तो पावर कितना आएगा, दिस विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. ओके, दिस विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. So here we have what we have studied. If I summarize this, we have studied what is power, what is the unit of power. Next we have studied how it is related with focal length, right? Then we have studied if we combine two or more lenses, what will be the total power of the combination. Okay, so this is for today's class. Thank you.